From startups to big tech, layoffs are hitting the industry hard. But behind the scenes, AI roles are booming. Companies are prioritizing automation, data, and AI innovation, even while cutting traditional roles. I was laid off. Indirectly off. Laid off 7 months back. I'm currently on bench from last 4 months. Not in a good situation in terms of my profession because right now I am out of my organization. So is this a layoff? 5 months, okay. Because it was a kind of indirect layoff. I was into US IT recruitments for 10 years, and from 2022, I was laid off. I'm currently on bench from last 4 months. I'm on bench. Yeah, I am part of IT industry. Go ahead. Vishal, even I got laid off 7 months back. प्रेशर आ रहा है रिजाइन करने का. पहली लाइन याद रखो. आई नीड टाइम टू रिव्यू. प्लीज शेयर डिटेल्स इन राइटिंग. और अंडर प्रेशर साइन बिल्कुल मत करना. अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि हाउ टू हैंडल दिस. नाउ व्हाई दिस मैटर्स. मैं विशाल, करियर ग्रूमिंग कोच. बहुत लोगों का यही प्रॉब्लम है, रिजाइन करो वरना टर्मिनेशन, या अभी साइन करो बैक डेट लिखो. आज हम कोर्स्ड रेजिग्नेशन को सिंपल वर्ड्स में समझेंगे, स्वेरेंस को क्लियर करेंगे और एग्जैक्ट लाइंस देंगे जो कि एचआर को बोलनी है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज कोर्स्ड रेजिग्नेशन? पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है. जब रेजिग्नेशन ट्रूली वॉलंटरी नहीं होता, प्रेशर, थ्रेट या फियर में लिया जाता है, उसे लोग कोर्स्ड या फोर्स्ड रेजिग्नेशन बोलते हैं. कई केसेस में इसे कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल जैसे कॉन्सेप्ट से कंपेयर किया जाता है, पर एग्जैक्ट राइट्स, रोल, कॉन्ट्रैक्ट, लोकेशन पे डिपेंड करता है. इसलिए आज का रूल सब रिटन में, एवरीथिंग इन राइटिंग, नो बैकडेट सिग्नेचर्स. नाउ फर्स्ट 5 थिंग्स टू गेट इन राइटिंग फ्रॉम HR, and this is what you have to say calmly to an HR on email. Please confirm reason for exit and last working day, swearance formula and payout timelines with TDS, benefits end date, especially when it comes to health insurance, PF, EPF processes and timelines, gratuity, eligibility and calculation approach. Now, why email? क्योंकि proof बनता है. Oral promises change हो सकते हैं. We don't want to get into that mess. So now we're going to talk about exact HR script. Could you please confirm in writing? Number 1, reason and last working day. Number 2, swearance formula and payout timelines with TDS. Number 3, benefits end date, health insurance. And number 4, PF, EPF and gratuity processes and timelines. Red flags you must resist. Backdated resignation मत लिखो. Voluntary for personal reasons जबरदस्ती. नो, आज ही साइन करो वरना मिसकंडक्ट. विटनेस नोट्स के बिना कुछ मत साइन करो. टाइम लो, आई नीड टाइम टू रिव्यू. प्लीज शेयर डिटेल्स इन राइटिंग. नेक्स्ट, स्वेरेंस इज नॉट इक्वल टू ग्रेचुटी. कीप इट सिंपल. स्वेरेंस इज इक्वल टू एग्जिट कॉम्पनसेशन ऑफर्ड ऑन ले ऑफ, टर्मिनेशन, पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन हो सकता है. कीप दैट इन माइंड. ग्रेचुटी इज इक्वल टू अलग स्टैट्यूटरी बेनिफिट. यूजुअली ये मिलता है 5 साल के सर्विस कंप्लीशन पे विद अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला. दोनों को मिक्स मत करो, दोनों की एलिजिबिलिटी अलग होती है. फाइनल नंबर्स HR से ईमेल पर लिख कर लेना. आई एम रिपीटिंग इट. नाउ इफ दे इंसिस्ट ऑन रेजिग्नेशन, यू जस्ट स्टे काम. विटनेस नोट्स रखो, बोलो आई विल नॉट साइन अंडर प्रेशर. प्लीज ईमेल डिटेल्स. अगर स्वेरेंस टाई इन ऑफर हो, negotiate clearly. Notice, pay, leave, encashment, due variable, bonus, relieving letter, any known compliant NDA terms, sub clauses we need on email. Please remember this. Now I'm gonna be talking about a formula, 10-day plan called secure. अगर risk high लग रहा है, use this धड़ल्ले से. S for stabilize and document meetings, emails, screenshots, no panic signatures. E stands for email HR, reason, last working day, swearance, TDS, benefits, end date, PF, gratuity in writing. C stands for cash and coverage, EPF, passbook, insurance, portability, personal cover, EMF, EMIs, plan, everything. U, upgrade your resume. Proof, impact, wins, folders should be ready because now we're gonna be jumping into the next. R, relationships, 2 to 3 references log.
Recruiters have to be kept warm. E. Exercise daily. 3 tailored applications, 10 warm intros, 2 mock interviews per week. Email templates are going to be attached here. Pinned comments. Email templates I'm giving you. Make sure it has everything. HR clarity, benefits, end date, gratuity. Copy paste कर सकते हो. बस आपका details डाल देना. Yes. Now आज का big takeaway. In writing ये आपकी सेफ्टी स्विच है और आपकी सेफ्टी किट भी है और अंडर प्रेशर साइन मत करो. फ्री ले ऑफ रेडीनेस चेकलिस्ट अटैच कर रहा हूं, ईमेल्स अटैच कर रहा हूं जिसमें पीएफ इंश्योरेंस, रेड फ्लैग्स, एवरीथिंग इज देयर. नाउ यू जस्ट नीड टू कमेंट सिक्योर. अगर आपको टेम्पलेट्स चाहिए, वी कैन गिव यू मोर टेम्पलेट्स इफ यू नीड. प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. यू हैव टू गो एंड गेट दिस क्लियरली. स्टे काम, स्टे motivated and go all out in your career. Layoff is just not the last thing for you. And I could not successfully do any pitch in over there. I really didn't know what is my market value. Also the mid-career who was struggling for job switch and the hike. I did so many things to get a promotion in my organization for the salary hike itself. In the yearly appraisal, I thought it will be as per the standard process. I never insisted. I get a complete increment up to 68% in the final deal. I'm an introvert guy. I was in a package of almost 15 lakhs somewhere. Either I will get 30-40% hike. That should be the maximum hike. There was a time even when my wife told, do you think you can jump from 15 to 30? Is that possible for you? This is how market works. Even I was under an impression that from 15 I will land up at least 24. Good part was this was the first interview I cracked it. Even I have 2 more offers as of now in my hand. I'm going to join on 14 July and from 15 I have cracked it for 34 lakhs. When I joined, I had over a decade of HR transformation and leadership experience. But despite all of that, I felt stuck. I was asking myself, like, am I growing in a right direction? How do I take my career beyond internal HR role? What's my big purpose in upcoming years? And that's when I realized I needed clarity and guidance. And here what happened next is, soon after the program, I stepped into a brand new role, which is as a director HR transformation at Qualify AI. This wasn't just another job for me. It was something I had secretly been dreaming of. रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा. थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी.